right? Okay. So I welcome you all in this first event under the Women Empowerment Committee of UCCI. And I'm thankful to Komalji, our president, and the entire team for making me the chairperson of this event, of this committee. And I wholeheartedly welcome you all in this first session. Here, we'll be covering about lots of women rights and educating them about various opportunities and insights. And regarding this session, I would like to say that under Hindu law, the property that can be held by a woman is divided into two categories. That is Streedhan and non-Streedhan. The word Streedhan is constituted of two words, namely Stree, meaning women, and Dhan, meaning property. So Streedhan is the property that is given to a woman at the time of her marriage. So to know more about what is Streedhan and how women can protect their wealth, okay. We have Advocate Suchita Nagori with us, who is mother of two beautiful kids and with 18 plus years of experience in legislation and consultancy and 5 plus years of academic work and accounting honors graduated. Suchita pursued her dream of joining the legal fraternity by doing LLB and LLM from JNVU, Jodhpur. Currently being associated with University College of Law, MLSU, as guest faculty. She is also involved in active consultation in the field of service and civil matters, along with non-litigations. In Udaipur, she had opportunity of working with HRH Group, that is City Palace, as their legal consultant, and for over 9 years. And prior to that, she practiced in the High Court Jodhpur and learned the legal craft under the able guidance of senior advocate Marudhar Mridul Saab. She loves to share her knowledge and experience and has conducted various workshops at different platforms. So we welcome Suchita Nagori. Suchita, now the stage is yours. Welcome. Thank you so much, Hasina. It's a pleasure to be here and be able to talk about various aspects of law, which is usually not very clearly understood. Naam suna hai, but uska meaning kya hai, nahi pata hai. And as Hasina said, we are talking of women empowerment, and there's no better way of empowering ourselves than by knowing what is our right. So I've chosen two topics to speak about today, Streedhan and will. Streedhan mein to sab samajh gaye because as Hasina defined, we are talking of our property. So property mein hamara right samajhna to samajh mein aata hai. The other aspect is will. How is will your right? Definitely. जब प्रॉपर्टी आपकी है तो उसका डिस्पोजल, हाउ यू वांट योर प्रॉपर्टी टू चेंज हैंड्स, आपसे आगे कहां जाएगी, दिस इज आल्सो योर राइट, एंड दैट इज व्हाई विल इज आल्सो योर राइट. सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट स्त्रीधन. Suchita, I'll be pardon, but if anybody have some questions and answers, they can please write in the chat box so that in a while Ruchika will take the questions. So Ruchika will take the questions and then she can ask you, Suchita. Sure. So let us first talk about Streedhan. बहुत simple meaning है word को अगर हम संधि विच्छेद कर दें, स्त्री and धन, all property that belongs to women. थोड़ी सी दिक्कत आती है जहां हम, because हम normal routine life में स्त्रीधन का use सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं जब किसी के घर में कोई डिवोर्स का मैटर अराइज होता है. बट स्त्रीधन हैज अ लॉट मोर टू बी अंडरस्टूड अबाउट. बेसिकली अगर आप हिंदू लॉ देखते हैं, देन स्त्रीधन इज ऑल दैट बिलोंग्स टू अ वुमन. नाउ व्हाट बिलोंग्स टू अ वुमन? ऑल प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. कहां से आ सकती है आपके पास ये प्रॉपर्टी? देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट. यू कैन इनहेरिट from your parents, grandparents, whatever the inheritance history is, wahan se. Partition. If you belong to a joint Hindu family, undivided family ka aapke paas property hai, and we all know the current law says women also have a right in the property. So by partition of the property, by gift and will, kisi ne aapko gift diya hai, kisi ne will mein aapko property di hai. Self acquired.
आपने अपनी कैपेसिटी, अपनी अर्निंग में जो प्रॉपर्टी खरीदी है, इन केस ऑफ डिवोर्स, एक्सक्यूज मी, इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस या एक लंप सम मनी नहीं देकर आपको उसकी जगह प्रॉपर्टी या कोई दूसरा असेट आपको दे दिया जाता है. लास्ट, you can also acquire property from स्त्रीधन in a very narrow sense. बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में समझे तो ये सारी प्रॉपर्टी जो आपको अलग अलग मीन्स से मिल रही है, एवरीथिंग इज योर प्रॉपर्टी, सो इट गोज अंडर स्त्रीधन. बट अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं तो वहां स्त्रीधन को थोड़ा सा डिफरेंटली डिफाइन किया गया है. देयर स्त्रीधन रेफर्स टू ऑल दी असेट्स जो आपको एट द टाइम ऑफ मैरिज के फंक्शन या बाद में एट चाइल्ड बर्थ और ऑन एनी अदर ओकेजन आपको गिफ्ट किए गए हैं. दैट इज योर स्त्रीधन. नाउ स्त्रीधन के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं. क्या आपका है, क्या आपका नहीं है. सो व्हाट ऑल बिलोंग्स टू यू? वेरी सिंपल, एनीथिंग दैट इज ज्वेलरी, कैश, प्रॉपर्टी, एनी अदर काइंड ऑफ वैल्यूएबल, आपको अप्लायंसेस, फर्नीचर, एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज आपको जो मिलता है, दैट इज योर स्त्रीधन. यहां थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूंगी, इवन एज अ मेडन और एज अ विडो अगर आपको कुछ मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्त्रीधन. यूजुअली हम एज अ राइट ऑफ स्त्रीधन बात सिर्फ मैरिज के टाइम पे मिली हुई चीज की करते हैं, बिकॉज द डिस्प्यूट यूजुअली अराइजेस एट द टाइम ऑफ सेपरेशन. तभी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है. एज अ मेडन आपको जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं उस पर यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता है, एक्सेप्ट फैमिलीज जो where the males of the family may question your right on the property. As a widow आपके इश्यूज नहीं आते हैं स्त्रीधन को लेके, मोस्ट ऑफ द टाइम सेपरेशन पर आते हैं. आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी विच यू हैव विद योर हस्बैंड और योर इन लॉज, उसमें से आपका क्या है. व्हाई डू यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज स्त्रीधन आपके हाथ में आपकी एब्सोल्यूट ओनरशिप की प्रॉपर्टी है. व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट ओनरशिप? एब्सोल्यूट ओनरशिप इज जहां उस प्रॉपर्टी से डील करने के सारे एक्सक्लूसिव राइट्स आपके पास हैं, whether it is sale, lease, rent out, transfer, will. आप आपकी प्रॉपर्टी को लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी हर तरीके से उसमें डील विद करने का राइट रखते हैं. पहले आपको इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी से डील करने के लिए आपके हस्बैंड या इन लॉज की परमिशन चाहिए थी. आई एम टॉकिंग ऑफ अ वेरी एज ओल्ड कॉन्सेप्ट, बट नाउ इट डजंट हैपेंस. सो इस सब, दैट मीन्स आप उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको आगे देना चाहते हैं. इफ यू आर इन डिफिकल्टी, आप क्या चीजें क्लेम कर सकते हैं. स्त्रीधन में मिलने वाली कब मिल रही है आपको? इंडियन हिंदू सिस्टम ऑफ मैरिज हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेरे, और फेरे में हथलेवा छुड़ाते टाइम आपको गिफ्ट्स देने का कॉन्सेप्ट है. वो गिफ्ट आपकी वेडिंग के फंक्शंस में, प्री फंक्शंस, पोस्ट फंक्शंस में आपको गिफ्ट्स मिलते हैं. Usually in the Indian society, a lot of celebration is when you have kids. उस वक्त आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, and all other such occasions, whatever is being gifted to you is your स्त्रीधन. अब ये भी समझना जरूरी है कि क्या स्त्रीधन नहीं है. At the time of marriage, whatever is being gifted to the groom, वो आपका स्त्रीधन नहीं है. If your parents gift something to the groom, उसकी ज्वेलरी, उसके एसेट, समथिंग फॉर हिज पर्सनल यूज, सो टुमारो यू कैन नॉट से मेरे पेरेंट्स ने दिया था. हाँ, बट आप ये कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने जो मुझे दिया था वो मेरा है. जो आपको दिया है, वेयर द इंटेंशन इज गिफ्टिंग टू यू. बहुत क्लियर है, इंटेंशन देखना है. आपके लिए दिया है आपका है, सामने वाले के लिए दिया है उसका है. अब चाहे आपके पेरेंट्स ने दिया है या उसके पेरेंट्स ने दिया है, इट इज अ वेरी क्लियर डिमार्केशन. Another thing, हमारे यहाँ अक्सर होता है, for tax purposes and other such related stuffs, property is bought in the name of wife's name. We all understand belonging to different faculties, service class, business, और हम एक division रखते हैं assets में for the taxation purpose. आपके नाम पे खरीदी हुई property which was just bought for tax purposes, idea आपको गिफ्ट करना नहीं था, it is not your स्त्रीधन.
I am residing in a house that has been bought in my name, but that has not been gifted to me. आपका स्त्रीधन नहीं है, आप एज ऑफ राइट उसको क्लेम नहीं कर सकते. यस, यू कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स. मेरे नाम पर है, मैं साइन नहीं करूंगी एंड ऑल दैट स्टफ. आई एम नॉट सेइंग दैट इज नॉट पॉसिबल, बट यस, you cannot claim it as your Streedhan. And any other such investments which have been made. Acha, if you are earning member of your family and you spend on your daily expenses, लड़ाई के टाइम आप ये इशू नहीं ला सकते, तब भी सब खर्चा मैंने उठाया था, आपका घर था. प्लीज बी क्लियर. When your husband spends or your father-in-law spends, और वो तो घर खर्च है, उसकी ड्यूटी है, आपकी भी उतनी ही है. So your rights को हम बहुत ऐसे strongly we will not use them to create any negativity. It is clear. If you spend in the daily household expenses, it is fine. It was your duty, you did it. You do not claim these things. But yes, you claim what is yours, what has been gifted to you. What is the purpose behind understanding this? One, in case of dispute, what can you ask for? जब आप will लिख रहे हैं, which is our next topic, आप उस will में क्या mention कर सकते हैं? Streedhan is your property, so you have a right to will it to somebody else. So that is why also you need to understand Streedhan. Now बहुत बार question आता है separation पे, Streedhan में अगर कोई property है and that property has been invested and it resulted in creation of another wealth or property. आपका स्त्रीधन का फ्लैट है, किराए पे दिया हुआ है, उससे इनकम जनरेट हो रही है, उस जनरेटेड इनकम से आपने एक और प्रॉपर्टी खरीदी है. Where does that go? स्त्रीधन. Because it was purely acquired on the basis of स्त्रीधन. स्त्रीधन की कोई चीज थी, आपने आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, एनीबडी, हस्बैंड किसी के पास भी रख रखी है. They are only the custodian. How do we define custodian? Custodian is जिसकी primary duty है आपकी property की हिफाजत. They cannot use it कि मेरे पास पड़ा था, मैंने use कर लिया. Sir, this is not allowed. You are just a caretaker. I am the owner. So that is your right. Please understand the concept behind explaining Streedhan is never to create differences in the family that tomorrow you go and claim things as yours. It is only that in case difficulty arises, आप किसको अपना right मान सकते हैं. And again, even for positive use, for taxation purposes also you need to understand कौन सी चीज आपकी है, कौन सी दूसरों की है. आप will लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी को आप will में इंक्लूड करेंगे. How do you claim this Streedhan? So there are some basic precautions जो हमें रखने होते हैं. Whatever is being gifted to you, maintain a list of this. कोई भी important function पे जहां से major source of gifting हो रही है, especially जैसे हमारी शादी या कोई बड़ा occasion, write a list, get it signed by 2 people. आपने एक evidence create कर दिया. आपकी खुद की बनाई हुई लिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है. Signed by 2 witnesses, you've created evidence for yourself. All bills related to purchase of such property आपके नाम पर होने चाहिए. Try and keep your property separate. I am again repeating, मैं घर में लड़ाई करा के चीजें अलग रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, but in case there is any problem, there is any issue, see how you can separate things ताकि आपको एक source of assistance मिले. There is something on which you can rely on. अगर आपकी कोई भी स्त्रीधन प्रॉपर्टी in hands of in-laws or anybody else वो यूज कर लेते हैं to pay off debts or any other things, उन पे फिर भी लाइबिलिटी है आपको वो रिटर्न करने की. They cannot say an excuse कि हमने तो यूज कर लिया, सेटल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, गिफ्ट कर दिया. They cannot do it. क्योंकि ऐसा कुछ भी करने से पहले your permission was required. So this, and अगर फिर भी इशू आ जाए, somebody refuses to return your स्त्रीधन, आप क्या करेंगे? पहले तो डिफिकल्ट था, nowadays तो we all have our phones in our hand 24/7.
clicking pictures of anything and everything. Everything that is gifted to you is there on record in your albums, videos. ये सब एक evidence है आपके स्त्रीधन का. The other aspect of स्त्रीधन जो हम सब करते हैं, a big mistake, थोड़ा सा show off culture, mother-in-laws humble, अच्छा दिखाने के लिए all possible jewelry, cash हम शादी के फंक्शन में रख देते हैं. जॉइंट प्रॉपर्टी है पर क्या है, दिखता अच्छा है, सब देखेंगे. डोंट डू दिस. आपने वहां रखा है उसको देने के इंटेंशन या नहीं इंटेंशन से, पर आपने सबको दिखाया है कि मैं ये गिफ्ट दे रही हूं. आप गिफ्ट दे रहे हैं, फोटोज है, एविडेंस है, आपने अपने घर की सारी जॉइंट प्रॉपर्टी को स्त्रीधन के कैटेगरी में डाल दिया है. I have come across many such cases where the in-laws then come and say, ये तो मेरा था. Mother-in-law poor actually cries, ये तो मेरा स्त्रीधन था, मैंने तो चढ़ा दिया था, दिखाना था, अच्छा लगता है, whatever. आपका था, जो भी था, आपने खुद ने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के एविडेंस क्रिएट किया कि ये किसी और का स्त्रीधन बन गया. You make big, you buy things for your own purpose in the house. घर खरीदा, ये खरीदा, पर सबके सामने बहू के लिए खरीदा है. Don't do this. Nobody is saying you cannot gift, आपको नहीं देना है, आपको देना है. But जहां कहीं precaution की बात आती है, as a lawyer, I'm not talking about how we should behave in the house, but I'm trying to tell you is क्या precautions, क्या safeties की जरूरत है. एज अ फीमेल, अगर आपको आपका स्त्रीधन प्रोटेक्ट करना है, देन एंश्योर कि वो सेपरेट है, लिस्टेड है, आपके पास में है, आपने उसका कंट्रोल हैंड ओवर नहीं किया है. एज द इन-लॉज और अदर फैमिली मेंबर्स, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो आपके ही अगेंस्ट उसका एविडेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि अगर आपने किया है, देन शी हैज ऑल वैलिड लीगल राइट टू क्लेम इट, और कोर्ट भी आपके अगेंस्ट जाकर उसको उसका स्त्रीधन दिलाएगा. In case the in-laws and family members refuse giving of स्त्रीधन, इसका सिविल और क्रिमिनल केस दोनों बनता है. सिविल केस तो ऑब्वियसली अंडर मेंटेनेंस एंड स्त्रीधन और सेपरेशन आप ये सब क्लेम कर सकते हैं. एंड क्योंकि आपको कस्टोडियन माना गया है उस स्त्रीधन की प्रॉपर्टी का, और आप रिटर्न नहीं कर रहे, देन यू आर क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. So you have a list of litigations जो initiate किए जा सकते हैं आपके against under various provisions. So ये था basic about स्त्रीधन. If somebody has a query, I will answer that on स्त्रीधन, and now I will switch over to Will, because in our participants we have some male members also जिनको ये स्त्रीधन का concept में बहुत interest नहीं होगा. So let us talk about Will. So Suchita ji, there are a few questions. Maybe we can Yes. take them now. Sure. So one question is that say both husband and wife invest in a house, they pay equal in EMI. So Okay. to whom how would that be handled? So Okay. so one is that, and in the same lines there is that if they have a joint account, joint bank account, say both of them are earning and they have one account, Yes. how would such situations be handled? Okay. A joint property is divided also on the basis of joint ownership. जब भी आप घर दो के नाम पे खरीदते हैं या कोई भी एसेट दो के नाम पे खरीदते हैं, उसको बेचने के लिए भी, for sale or any other purpose, it again requires sign of both the persons. It is simple. It is not necessary कि husband and wife ने ही joint property खरीदी हो. हमारे घर तो joint family systems है. We have two brothers buying the house together. So it will be dealt as if it is a joint property जिसके दो owners है, irrespective of the fact कि वो husband and wife है, दो brothers हैं, दो sisters हैं. उसकी डीलिंग में स्त्रीधन से कोई डिफरेंस नहीं आएगा. जिसने जितना पे किया है, whatever the legal documents speak, उसके हिसाब से इस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा. Again, even for the joint account, most of the time nowadays, इसलिए जब भी आप बैंक में joint account खोलते हैं, we keep this provision कि या तो दोनों जने साइन करेंगे और authorization is required. And if no such thing has been done, because usually in our family we rely on each other, और हम इस तरह के restrictions जो business में impose होते हैं हमारी family accounts के लिए हम नहीं रखते.
उस केस में both the parties have to be alert, go and inform your bank ताकि दूसरा इंसान सारी चीजें उसमें से withdraw नहीं कर ले. एंड जब भी लिटिगेशन में जाएगा, जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है उस अकाउंट में, it will be divided on that basis. The Streedhan thing will not come here. Streedhan का context सिर्फ इतना है कि जितना as a woman you've contributed to it, उतना आपका Streedhan है. What your husband has contributed, it is his self-earned money, और वो उसनी का right है, आपका right नहीं है. Correct. Thank you. There's another question. You Yes. mentioned that about jewelry, you know, we get gifts, और वो साल भर में मिलती रहती है, किसी कभी हाँ जी, बर्थडे बिल्कुल. पे, कभी एनिवर्सरी पे, एंड ऑब्वियसली सबका प्रूफ या सबकी फोटोग्राफ्स नहीं होती हैं. सो व्हेन somebody say creating a will, भले ही डिस्प्यूट नहीं हो, लेकिन जब will बना रहे हैं, so then they can obviously divide it between whomever they want, right? They have full right even if they don't have any proof against it. Yes, yes. If look, So if there's no dispute, then making of will is very simple. Because usually if you see when the will is being made, most of the times there is a concept of mutual will या joint will जिसको हम कहते हैं. So what we do in this is a concept which I was about to take up. The husband rights in case of survival by wife, and that is the either spouse is mentioned, whosoever survives gets the property. And उसके बाद after the demise of both the partners, property कैसे vest होगी आप will में वो लिख देते हैं. So you need not have proof. Proof is only required when you go into litigation, क्योंकि तब आपसे evidence मांगा जाएगा. And अगर आपके पास bills and other stuffs नहीं है, then there are other manners of proving. आप बताएंगे इस occasion पे मिला था, this and this person is a witness कि ये मुझे gift दिया गया था. So that is altogether a different thing, क्योंकि that is advocacy, how you prove in the court. But yes, you have a right to write it in the will. Great, thank you. I don't believe there are any questions, further questions, so we can go ahead. Okay, so now we are going to talk about will. एक बड़ी सी दिक्कत है, वो ये है कि जैसे आपको बोला जाता है ना will बनानी है, you start looking around. Do I have white hairs? Graying? बूढ़े हो गए क्या? जरूरत है? अभी बहुत टाइम है, सबको लगता है. I know today also I feel I have years to live, and 20 years down the line भी मुझे यही लगेगा अभी तो बहुत साल हैं. पैंडेमिक ने हमारी गलतफहमी को दूर कर दिया है. ना एज है, ना टाइम है, ना कंट्रोल है. There is nothing wrong in writing a will. Writing a will कोई आपका डेथ वारंट नहीं है कि मैंने will लिख दिया तो अब मैं मरने वाला हूं. ऐसा होगा नहीं. बट हाँ, अगर मर गए तो पीछे वाले आराम से रहेंगे और आपकी आत्मा भटकेगी नहीं, बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी जिसको देनी थी उसी को मिल रही है. अदरवाइज यू आर क्रिएटिंग डिस्प्यूट्स. विल नहीं लिखकर आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं. देन द अदर क्वेश्चन इज, आई जस्ट हैव वन ऑफस्प्रिंग, एक ही बच्चा है, तो डिस्प्यूट कैसे आता है? योर बैंक्स, योर रजिस्ट्रार ऑफिस सब डॉक्यूमेंटल प्रूफ मांगते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे क्यों ट्रांसफर करी जाए. They'll tell you, हमको पता है आप अकेले वारिस हो, पर फिर भी प्रूफ चाहिए. That proof is your will. So please write a will. कोई complications नहीं है. When I discuss this today, you will come to know बहुत simple है, आप खुद घर बैठ के कर सकते हैं. You do not require me. आपको कोई वकील नहीं चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए. नो फैंसी लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज जस्ट योर नॉलेज कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है और आपको किसको देनी है. जस्ट गिव मी अ मिनट एंड आई विल शेयर अ स्क्रीन विद यू एंड देन वील कैरी दिस अहेड. Hasina, is my screen visible? It is coming blank actually. Nothing is there, just a black box. Okay, just give me a second.
Is it now visible? Not yet. Not yet. Till the time she's arranging that, Hasina, I had also mentioned the question in the chat box. If you can please see, and that can be taken up later on. Yes, why not? I'll just check it. Yeah. Gift or will received from father will be considered Streedhan or not, and other siblings can claim that. Is it wrong? Suchita, can you hear me? There is one more question. There's one more question. There's some issue. I am not being able to share my screen, but that's not an issue. I'll answer the question. Okay. When Suchita both ji, partners are paying, Kaustubh to help. Yes, sir. I will do that. Actually, Suchita is already a host, so I think she can share her screen. I know how to share the screen. I think there's some technical issues that I'm facing. I'll just share it shortly. Okay, when both partners are, the question was something else. My chat box. Gift or will received from father can be it can be considered as Streedhan, and other siblings, can they claim, is it right or wrong? Okay. Any gift by a person who is entitled to gift, जिसको right है gift करने का, वो आपको कोई भी चीज gift कर सकते हैं, and the siblings cannot question that. And yes, it is a part of your Streedhan, not for the purpose of marriage act, but normally आपका right है क्योंकि वो आपको gift की गई. It is like any other normal gift. But what is necessary is your father should have a right to gift it to you, और वो उनकी ancestral property नहीं है. Ancestral property gifting के norms अलग हैं और self acquired property के norms अलग हैं. So and yes, if it is if husband gifts you something, gift received from husband, yeah. Yes, it is your Streedhan. You have all valid rights to that property. Nobody can question that. And another question here in the chat box was, when both partners are paying EMI for a property, then that property belongs to whom? To both of them. The property belongs to both of them. But it should be registered in their names. आप कई लोग ऐसे करते हैं ना, खरीदा एक के नाम से है, फिर one of the spouse transfers the money into the other spouse's account and then EMI is being paid. तो फिर जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उसका है. If my husband is paying EMI and the house is in my name, the house is ownership, legal ownership मेरी है, but it is not my Streedhan. So ownership अलग है, Streedhan अलग है, payment का concept अलग है. And it is used in different manners to settle it. Okay, just give me one more second and I'll retry sharing the screen. Otherwise, I'll continue with the session. Still not visible. चैम्बर के एंड से तो कुछ नहीं हो रहा है, आसिफ से पूछ लो ना. I think chamber is left actually. हो रहा है. I think it's happening. I started screen sharing. Yes. Hasina, now is the screen visible? No, not yet. But it is written that Suchita started sharing screen, but it is still that black screen is there. I cannot see anything written on it. I think you can go ahead, essay, because of pollution, I think people might be leaving, so we can continue. Okay. Yeah. Okay, in that case. It's visible, Suchita, now. Okay. So, yes, we were... Okay. Right. Thank you. So, we were talking of making of will. Yes, one must make a will. I've already told you क्यों करनी है और क्यों उससे हमें नहीं डरना है.
So what exactly is a will? I think all of us are aware. It is simply जब हम एक legal document create कर रहे हैं to tell after us how our asset has to devolve. मेरा property आगे कहाँ जाएगा? Yes, when I have spent years in earning it, I have actually put in my time, effort and money in acquiring this property. तो वो आगे कहाँ जाएगी? And कहाँ जाएगी इससे भी ज़्यादा? It reaches the right people in an easy manner. बिना कोई दिक्कत के उनको उनके rights clearly मिल जाएं. We do not want tomorrow the court to decide कि property का part कहाँ किसको मिलेगा. Or you have minor children. We do not want कि सब कुछ होते हुए भी वो परेशान हो. That is why you need to write a will. So who can make a will? Anybody and everybody by and large has a right to make a will. कुछ basic requirements है. 18 years of age major होना आपके लिए जरूरी है. Of a sound mind होना जरूरी है. Under any medicine के influence या intoxication के influence, किसी के force में आप will नहीं बना सकते. Will means free will, अपनी इच्छा से. Rather the act has beautifully said कि even incapacitated person can make a will. Blind है, deaf है, dumb है. But if they know कि उनकी property क्या है और किसे देनी है, what will be the effect of writing a will, they have a right to make a will. Even an insane person, usually आपने देखा होगा कि terminal illness या old age में people suffer from this problem कि they have lapses of sanity. कुछ टाइम वो सही रहते हैं और कुछ टाइम उन पे वो दवाई के असर या एज का असर होता है जब उनको नहीं समझ आता कि उनके आसपास क्या हो रहा है. So even for such people, the law says, in the intervals of sanity, they have a right to make a will. So will कौन नहीं बनाएगा? Simple. A minor नहीं बनाएगा. Anybody under influence of any drugs or anything. Simple है. जब आपको समझ नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं या आपके बिल लिखने से प्रॉपर्टी को क्या होगा, then you cannot make. Otherwise, in all cases, if you are adult and of a sound mind, you can make a will. Joint family and Hindu undivided family property cannot be willed. Yes, this is the most commonly asked question. मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, नाना की प्रॉपर्टी है, या हम इतने लोग हैं. जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी को आप विल से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. तो ऐसी प्रॉपर्टीज का क्या होगा? These properties will transfer from generation to generation. ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता रहेगा. किसी के पास अपना सेपरेट राइट नहीं होगा, बट उस जॉइंट प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा आपका भी है. बस वो कौन सा हिस्सा है वो डिफाइंड नहीं है. And the day you define it, आपने सेपरेट कर दिया, वो प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी. इट विल बिकम योर ओन प्रॉपर्टी एंड यू कैन विल इट. बट जब तक उस प्रॉपर्टी का स्टेटस HUF प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, आप उसको आगे नहीं विल कर सकते हैं. सो हाउ डू यू स्टार्ट ऑफ मेकिंग अ विल? क्या करना है आपको? बहुत बेसिक क्राइटेरियाज हैं एक विल बनाने के लिए. सबसे पहले टेस्टामेंट्री कैपेसिटी. आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके पास राइट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में. मुझे मिलेगा तब मैं आगे ट्रांसफर करूंगी, कोई डिस्प्यूटेड है, किसी और की है, आई कैन नॉट डू. आई कैन ओनली विल अ प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू मी. So the moment you have a testamentary right in a property, आप अपनी will बना सकते हैं. will किस पे बनाएंगे? एकदम सिंपल प्लेन पेपर पर आप आपकी will लिख सकते हैं. कुछ नहीं चाहिए. Even if you have a diary, a rough paper, anything, कोई स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है, कोई लीगल पेपर की जरूरत नहीं है, nothing. You can write it on a plain piece of paper. उसको ना आपको नोटराइज कराने की जरूरत है,
आपको उसको रजिस्टर कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है. I am not saying that you should not get it registered. You should, because there are benefits of getting it registered. But there is no compulsion. प्लेन पेपर पे लिखी हुई विल भी एक वैलिड विल है. आपको क्या करना है? There are certain basic do's and don'ts of writing a will. Obviously, सबसे पहले with clarity your name, age, so that there is no confusion कि will कौन लिख रहा है. The date on which you are writing the will. क्या आप विल का कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं? अपॉइंटिंग एन एग्जीक्यूटर इन अ विल इज नॉट कंपल्सरी, बट इट शुड बी डन. एग्जीक्यूटर कौन होता है? आपकी डेथ के बाद आपकी विल, हु विल एंश्योर कि आपकी विल में जो भी आपने लिखा है वो ढंग से किया जाए. दिस एग्जीक्यूटर डज नॉट हैज टू बी एन एडवोकेट या लीगल ऑफिसर या एनी जुडिशियल ऑफिसर. आपका कोई भी नोन फ्रेंड रिलेटिव जिसपे आपको ट्रस्ट है कि आपके लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस को वो ढंग से फॉलो कर देगा. He can be the executor. You usually choose somebody जो आपसे कम एज में है. आई अंडरस्टैंड कहीं नहीं लिखा है कि ज्यादा एज वाला इंसान की डेथ पहले होगी, बट वी बिलीव इन अ सर्टेन मैनर द लाइफ कैरीज ऑन. सो वी ट्राई एंड अपॉइंट एन एग्जीक्यूटर हु इज अ यंग हेल्दी पर्सन एंड जिसपे आपको ट्रस्ट. आप आपकी सारी मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल्ड लिस्ट लिखेंगे. यू आर नॉट लीविंग एनी एम्बिग्विटी इन द विल. मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को जाएगी, नहीं. सारी प्रॉपर्टी कौन सी? आपकी जितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी लिस्ट बनाइए, जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी लिस्ट बनाइए. अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स है देन मेंशन. नाउअडेज इट हैज बिकम सिंपल बिकॉज बैंक अकाउंट्स या शेयर सर्टिफिकेट्स और इन सब में यू हैव एन ऑप्शन ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ अ नॉमिनी, और वो डायरेक्ट आपके नॉमिनी को मिल जाता है. बट अगर आपने कहीं नॉमिनी नहीं लिखा है या आप फिर भी एक कंप्लीट लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो जितना भी है, अगर गोल्ड है, ऑर्नामेंट्स है, कुछ और है, सारी लिस्ट, और आप कौन सी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं, दैट ऑल्सो नीड्स टू फाइंड अ प्लेस इन द विल. कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है. अगर आपकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो आप उसको किसी भी मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सारी प्रॉपर्टी आपके रिलेशन में, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपकी पेरेंट्स, आपके बच्चे, यहां तक कि somebody who is not related to you, if you want you can gift it to a stranger. हमारे पास hundreds of examples, especially in foreign, where the people die leaving everything to their pets because they are so attached to the pets. आप किसी को भी कर सकते हैं. अगर आप आफ्टर योर लाइफ इफ यू वांट कि आपके प्रॉपर्टी से कोई ट्रस्ट क्रिएट हो, तो आप आपकी विल में ये भी लिख सकते हैं कि ऑल दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू गो टू सच एंड सच ट्रस्ट व्हिच हैज टू बी क्रिएटेड इन माय नेम. ये सारा लिखने के बाद you sign it and get it signed by at least 2 witnesses. प्लेन पेपर पे सिर्फ आपके साइन किए हुए को विल नहीं है. विल के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 2 लोग उसके ऊपर साइन करें. कोई जरूरी नहीं है कि नोटरी के सामने साइन किया गया है या कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर किया है. आपने घर पे लिखा और घर पे साइन करा दिया, सफिशिएंट. बट यू शुड गेट इट रजिस्टर्ड. कंपल्सरी नहीं है, बट कराना इसलिए चाहिए बिकॉज once your will is registered, the chances that there'll be fraud, या अगर आपको कोर्ट जाना पड़ता है टू प्रूव अबाउट योर विल कि आप यही लास्ट विल है या कुछ है, तो वहां एक रजिस्टर्ड विल आपको हेल्प करती है. एक रजिस्टर्ड विल पे प्रोबेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना इज कंपैरेटिवली इजी. दैट इज व्हाई यू शुड गेट योर विल registered. Tomorrow somebody cannot say कि ये forcibly लिखाया गया था. आप खुद रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में गए हैं, वहां साइन किया है और आपकी विल रजिस्टर कराइए. So the chances of anybody claiming that it was under undue influence reduce हो जाता है. Another very important thing is even after your death a will can be registered.
अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अनरजिस्टर्ड विल पड़ी है, आप बाद में भी जाके उसको रजिस्टर, आपका टेस्टेटर, द लीगल हेir, if there is need, they can go to the sub registrar office and get it registered. Look, I've written what is not required. You do not need a stamp paper, notary, lawyer, कोई specific format, कोई language, किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है. Revocation and alteration of will. मैंने अपनी will लिख दी, फिर after some years I may want to change it. Then what do I do? आप किसी भी टाइम अपनी will change कर सकते हैं. Registered will अगर है तो उसके पीछे आप एक डॉक्यूमेंट लगाते हैं जिसको हम कोडिसिल कहते हैं. कोडिसिल इज अमेंडमेंट और चेंज जो आपको ओरिजिनल विल में बनाना है, करना है. आप लिखते हैं कि दिस थिंग्स नीड्स टू बी चेंज्ड और उसको भी जाके रजिस्टर करा देते हैं, या आपकी नई विल तैयार है. और अगर आपने रजिस्टर नहीं कराई है, देन इट इज सिंपल, पुराने वाले को फाड़ के फेंको और एक नया लिख दो. वैसे भी डेट वाइज डिसाइड करेगी, विच एवर इज योर लास्ट रिटन विल, दैट विल बी एनफोर्स्ड. सो इतना सिंपल है विल को ऑल्टर. मैक्सिमम टाइम ये टेंशन रहती है कि कल मेरा मन बदल गया तो क्या होगा, और somebody else may require my asset and I want to give it to it. Simple, you can change it. कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है will को चेंज करना. So that should be done. Now, when we are writing will, a very usual manner of writing a will is a joint or a mutual will. Joint or mutual will में usually the spouses write it. एक तरीका तो ये है कि दोनों लिख दे कि हमारे ये असेट्स हैं और इनको हम ऐसे ऐसे आगे देना चाहते हैं. दूसरा तरीका होता है both the spouses write that whosoever will survive, सारी प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट हो जाएगी, and after the death of the second spouse also, सारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, बेटे को इतना, बेटी को इतना, सेकंड बेटी को इतना, ग्रैंड चिल्ड्रन को इतना, whatever, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं. सो इट इज यूजुअली एडवाइजेबल कि आप अपनी विल म्यूचुअल या जॉइंट विल करें, बिकॉज बहुत सारी बार ऐसे होता है व्हेन द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली राइट्स द विल, और इवन इन केस द फीमेल मेंबर, एंड देन द सर्वाइविंग स्पाउस फेसेस अ प्रॉब्लम. फादर की डेथ हो गई, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बेटे को दे दी, एंड नाउ व्हाट इज द वाइफ सपोज्ड टू डू? शी इज लेफ्ट without any property. And it is not new to us that there are cases जहां नहीं रखते हैं बच्चे, क्या करेंगे? So it is a very good manner of securing the financial situation of both the spouses कि आप एक joint उसमें रखें will. I am just about to finish my session. There are few important. Yes. There are just a few terminologies which I would like to explain, and then we are open for questions. Whenever we are talking of will, कुछ words use होते हैं. Intestate. If somebody dies without making a will, उसको intestate कहते हैं. In that case, the court will decide कि property कैसे dissolve होगी. कैसे सब स्वास्थ्य बढ़िया? Please mute whoever is. Okay. The next term that is used is the codicil. Codicil का simple meaning है आपने अपनी will register करा दी है और अब आपको उसको change करना है, तो आप एक extra paper पीछे लगाते हैं. It is just an amendment कि पुराना ये था, अब नई will ये है, और क्योंकि वो registered will है तो आप उसको फाड़ के फेंक नहीं सकते, dispose of नहीं कर सकते. So आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और जाके उसको भी रजिस्टर कर देते हैं. बट दिस डॉक्यूमेंट व्हिच इज रजिस्टर्ड इज नॉट योर विल. इट विल बी रेड एज एन अनेक्सर टू योर विल. साथ में पढ़ी जाएगी ओरिजिनल विल के. तो आपकी जो लेटेस्ट इच्छा है उसको भी आप आपकी विल में ऐड करा सकते हैं. एग्जीक्यूटर मैंने आपको बता दिया इज अ पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपकी एब्सेंस में आपकी विल के सारे क्लॉजेस को इन एक्शन लाने के लिए. Probate. Probate is an important term. बहुत सारी जगह when you go to claim your assets as per will,
the banks and other government offices आपसे probate certificate मांगते हैं. Probate is basically just when you go to the court is going to certify कि this is the last valid will. Because will तो इतनी सारी हो सकती है ना, आप हर बार एक नहीं लिख सकते. So how do you prove कि यही last valid will है? So the court determines it for you and issues a certificate कि ये last original will है जिसको effect में लाना है. So this certificate which is issued by the court is known as probate. And a testator is simply a person who either prepares your will, signs his or her name, and testifies the will. Okay, so I think I've taken a pretty long time. Should I take the questions, Suchita? Yes. Ruchika is there or not? Yeah, I'm here. You wish to take it? Okay, Ruchika, please continue. So there is one question here. After a will is registered, does amendment or codicil also need to be registered later? I think that question has been answered by Suchita ji, but if you want to elaborate a bit. Yes, you will definitely have to get it registered because जब आपकी registered will है तो वही आपकी valid will मानी जाएगी. So any amendments that you are doing need to be registered. अगर आप register नहीं कराते हैं, then again the difficulty to prove कि यही last है, यही actual amendment है जो आप चाहते थे, that again becomes a problem. So जो first बार register कराने का आपका intention था to ensure कि this is a valid document, उसका amendment के पीछे भी वही intention है that you put it on record. There is another question, which is, you mentioned that witnesses can be anybody. But Yes. then if it is a close family member, would that be accepted or can that be disputed in the court of law? So say if it's a daughter or a, yes, it is always safe अगर आप witness में उन लोगों को लो जिन्हें आप will में कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं. If you want an undisputed will, it is always safe to take an independent person as your witness. ऐसा नहीं है जिसको आप कुछ दे रहे हैं वो भी साइन करेंगे तो valid है, but you should avoid doing it because if there is any dispute later on, तो सबसे पहला चीज जो कोर्ट के सामने आती है वो ये आता है यही विटनेस है, इन्होंने जबरदस्ती साइन कराकर कर दिया है, नहीं तो ये किसी और से साइन कराते. This happens, so always avoid doing it. Okay. On the chat box, there were only these two questions. Are there any other questions? Yeah, I again wrote a question, Ruchika. It's about what is the difference between a registered will and notarized will, you know? Yes. Look, there are two concepts. Notary is a government post where the government has authorized some people to verify. तो नोटरी सिर्फ क्या करता है, वो वेरीफाई करता है कि ये जो साइन किए गए हैं, जो नाम लिखे गए हैं, these people came before me in person and signed. So आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने forge कर दिया है साइन. That is the work of a notary. जबकि registered document is something जो government record पे चला जाता है. That is the difference. Yeah, thank you. I have another question, but if you have time, then only I'll ask you. Otherwise, no. I am not aware of the time. Manjeet, if you could type your question in the chat box, it will be great. So that as we are reading other questions, we can read yours as well. All right, I'll do that. Yeah. Suchita ji, there's another question. Are two witnesses required or one is okay? Two. The law says two witnesses. Okay. देखिए इसमें बहुत सारा वो है ऐसे तो the act also says कि for people in armed forces in case of emergencies or extreme situations उनका deathbed wish oral what they say that is also an accepted will, but that is a privilege given to people of armed forces in extreme situations, but ideally will requires two witnesses. Okay. And for the executor, as you mentioned, it can be anybody. Anybody can be yes, family, a friend, anybody, a neighbor, anybody would be. But हम usually executor उनको बनाते हैं जिसका हमें पता होता है कि he is trustworthy, he is capable to execute,
And another thing that you should keep in mind is आप will में जिनको भी beneficiary बना रहे हैं, अगर executor ऐसा इंसान है जिसकी ये beneficiaries are in the influence, जो सुनेंगे, then things become easier for us. Unknown इंसान को executor बनाएंगे, then the beneficiaries may not listen to what he is saying. Correct. So no further questions here. Manjeet, maybe I typed my question, but I don't know why it's not reaching. It is okay, Manjeet. You can just put up your question. Please go ahead. Yeah, because there are no further questions here. So please go ahead. Yeah. So okay. The question is that I'll ask you, it's a personal question. My sister, she's an NRI. She lives in America, and she has been willed the property by my father. So for these 12 years, everything was non-controversial. She had a possession of the property and she had kept tenants. But now she's facing problems of encroachment by some people and also by some other siblings who are in the same town, not in Udaipur, it is there in Madhya Pradesh. So they're facing some problems. And because now she cannot travel because of COVID. So she's wondering, what should I do? Because the people have, they've taken possession of the property, half of the property. Look, if they've taken possession, आपको eviction का suit ही file करना पड़ेगा. But since she's received the property in will, there is no dispute to it. And if she cannot travel, it is very simple. She can authorize somebody to appear on her behalf. To ask, you can hire an advocate जिसको आपने authorization letter दे दिया है. Yeah. And then you can go ahead with the case. उनको आने की requirement नहीं. Most of the cases, the client is not required. We are there. Oh, okay. Thank you. You just need to sign an authorization. Yeah, I'll do that. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so much, Suchita. And now I request Manjeet ji to please give vote of thanks. Yeah, it's such a wonderful occasion to give thanks, because I would say that on behalf of UCCI Women Empowerment Committee, I'm very happy that we got this opportunity to hear Advocate Suchita Nagori. She has very extensively, very clearly, very interestingly tried to tell us everything about the will as well as the Streedhan. We all know that Streedhan is such a subject which, we take it casually. Ki, haan, theek hai, no problem, jab dispute arise hoga, then we will see. But the way she has explained, it is wonderful. So please accept our heartfelt thanks for coming here and of course delivering such a beautiful deliverance. हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं. And I also want to thank our President, UCCI President Komal Kothari ji for enabling us and providing us the platform ताकि आज हम लोग इतने interesting, informative और इतने relevant topics के ऊपर बात कर पाए हैं. And I express my sincere thanks to Ruchika Gotha for asking very interesting and very useful questions which were required for the subject. And I also thank all the participants on behalf of UCCI Women Empowerment Committee that you all had come, अपना valuable time आप लोगों ने दिया और आज आप यहाँ पर आए हैं and you have made the program very successful. Thank you everybody. Thanks a lot. Thank you so much, Manjeet ji, for these beautiful words. And my heartfelt thanks to Hasina and Komal ji to provide me with this platform. It was wonderful talking to all of you. Yeah, thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you. Thanks, Suchita. Thank you. I think now everybody, if they want, they can. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Hasina. Thank you.